Welcome back to the part 2 of psychodynamic theory. In part 1, I have explained a little about psychoanalysis, the school of thought founded by Sigmund Freud, and his famous iceberg theory of the mind. If you missed it, you can watch it through the link I have given below in the description. In this video, we will explore Freud's structure of personality, which consists of three components: id, ego, and superego. How these parts interact and shape our behavior. Let's find out. अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो आप लोगों ने वो एनिमेशंस देखे हैं जिसमें एक तरफ डेविल होता है, दूसरी तरफ एंजल होता है एंड दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं कि वेदर वी शुड डू दिस और नॉट एंड द पर्सन इवेंचुअली कम्स टू अ कॉम्प्रोमाइज़ एंड मेक्स अ डिसीजन विच इज़ सोशली एक्सेप्टेबल, राइट? सो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट जो है वो डेविल है who just wants to gratify the need instantly. Superego is the angel who wants to do the thing which is morally correct. And ego is basically the reality who has to behave according to the society. So let's understand each of the component in more detail. I'm going to first talk about id as the child is born with it. So it is the primitive and instinctual part of the mind that contains sexual and aggressive drives and hidden memories. So it works on pleasure principle and the personality of a newborn child is all it. एज़ अगर बच्चे को भूख लग रही है तो वो रोने लग जाता है एंड उसको इंस्टेंटली जब हम खाना देते हैं तो वो चुप होता है, तब वरना तो वो रोता ही रहता है. तो ही नीड्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स. इट कंप्राइज ऑफ टू काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट. एक लाइफ इंस्टिंक्ट होती है और दूसरी डेथ इंस्टिंक्ट होती है. सो लाइफ इंस्टिंक्ट को हम इरोस भी कहते हैं एंड इसमें लिबिडो होता है एंड दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इंडिविजुअल. इट डायरेक्ट्स लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज सच एज रेस्पिरेशन, ईटिंग, सेक्स. द एनर्जी क्रिएटेड बाय लाइफ इंस्टिंक्ट जो है उसी को हम लिबिडो कहते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज डेथ इंस्टिंक्ट which is basically the aggressiveness और हम बोलते हैं destructive force in all human beings. It is not affected by reality, logic or everyday world. ये unconscious part में ही it operates. So when the person is in infancy stage, the it is dominant. But as the child grows, it जो है वो submissive होता जाता है and ego develops. So ego develops between the stages of the phallic and latency stage, which is basically the psychosexual stages which I'll be explaining in the upcoming videos. And the last होता है वो super ego develop होता है. So let's come to ego and understand what ego is. So it works on pleasure principle and we cannot every time get the instant gratification because might of the situation or the norms we follow or the culture. So that is why ego develops, and ego is the rational part of our psyche which primarily operates at the conscious level and is the only part of the conscious personality. जो ego है वो develop ही इसलिए होता है जिससे कि वो mediate करे between the unrealistic id and the real external world. ये एक decision making component होता है personality का. And ideally the ego works by reason whereas the id is the chaotic and unreasonable part of our psyche and personality. सो ईगो ऑपरेट करता है ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल. वो रियलिस्टिक वेज में इट की जो डिमांड्स होती है वो सेटिस्फाई करती है. कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है या पोस्टपोन करना पड़ता है सेटिस्फैक्शन को टू अवॉइड द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सोसाइटी. क्योंकि ईगो जो है वो सोशल रियलिटीज़, नॉर्म्स, एडिकेट, रूल्स एंड कैसे बिहेव करना है इन सबको कंसिडर करते हुए सेटिस्फाई करता है द डिमांड्स एंड द नीड्स ऑफ अस. So like it ego also want to seeks pleasure and it has no concept as right or wrong, but it simply wants to achieve the satisfaction without causing any harm to itself or the id. फ्रॉइड ने एक एनालॉजी निकाली थी जिसमें उसने बोला था कि जो इड है वो हॉर्स है एंड द ईगो इज़ द राइडर. सो ईगो इज़ लाइक अ मैन ऑन अ हॉर्स बैक हु हैज़ टू होल्ड एंड चेक द सुपीरियर स्ट्रेंथ ऑफ द हॉर्स. एंड अगर जो इड है वो डोमिनेंट हो जाता है एंड ईगो फेल्स टू यूज़ अ रियलिटी प्रिंसिपल, उस टाइम पे हमें एंजाइटी एक्सपीरियंस होती है एंड फिर अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द एंजाइटी और द अनप्लेजेंट फीलिंग्स और जस्ट टू कोप अप विद द एवरीडे सिचुएशंस. Defense mechanisms I will be explaining in the upcoming videos, so don't worry. So let's summarize this id and ego component of our psyche with an example. Let's say कि हमें एक एक्सपेंसिव आइटम खरीदना है तो इट कहेगा कि आई वॉन्ट टू बाय दिस, इट लुक्स लग्जूरियस, स्टाइलिश एंड इट विल मेक मी फील गुड. बट ईगो कहेगा कि जो सैलरी है हम उसमें से कुछ पोर्शन सेव करते हैं फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड देन इफ आई स्टिल वॉन्ट इट आई विल बाय द बैग एज अ रिवॉर्ड.
राइट? तो ईगो ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है, इट डजंट हैव एनी राइट और रॉन्ग, ही जस्ट वांट्स कि ठीक है, आई शुड have enough money for my essentials and also for the bag, so I'll save the money. So ultimately, it is satisfying the its demands, but in a realistic way and in a socially acceptable way. Now let's understand the superego component and see what he would have done in this situation. Superego is the moral component of a psyche, representing the internalized societal values and standards and guiding our behavior towards more righteousness and including guilt when standards are unmet. सो इट को तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है. ईगो इज़ लाइक कि चलो ठीक है, आई विल अचीव और satisfy your needs and wants, but let's see how we can do it without harming anyone. And super ego will be like कि if it's not matching the societal values or standards, we are not doing it. एंड ये जो सोसाइटल वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स कल्चर हम सीखते कैसे हैं, हम ये सीखते हैं थ्रू आवर सराउंडिंग्स, पेरेंट्स, टीचर्स, पियर्स, कलीग्स. एंड ये 3 से 5 साल में ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज ऑफ द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. एंड ये इंश्योर करता है टू फॉलो द मॉरल स्टैंडर्ड. तो सुपर ईगो है तो अनकॉन्शियस का पार्ट, लेकिन इट इज़ द वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द सोर्स ऑफ आर सेल्फ क्रिटिसिज्म. हम इसको एक ट्रेडर या सप्लायर और रिटेलर की तरह मान सकते हैं ऑफ रिवॉर्ड्स, जो हमें कभी कभी फीलिंग ऑफ प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन देता है या फिर फीलिंग ऑफ शेम एंड गिल्ट, डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट द ईगो और द कॉन्शियसनेस इज एक्टिवेटेड. सुपर ईगो जो होता है वो हमारा एक इनर वॉइस होता है दैट टेल्स अस व्हेन वी हैव डन समथिंग रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल वो एक्सपेंसिव आइटम, तो इट को तो वो चाहिए लग्जूरियस बैग. ईगो सेज कि वी विल बाय इट बट लेट्स सेव सम मनी फर्स्ट. एंड जो सुपर ईगो होता है ना, वो तो मना ही कर देगा डायरेक्टली कि वी शुड नॉट स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी ऑन अ बैग व्हेन वी कैन सेव इट एंड बाय सम एसेंशियल थिंग्स. सो ईगो जो है, अगर वो गिव इन कर देता इट में, तो सुपर ईगो वुड बी द वन हु वुड मेक द पर्सन फील बैड थ्रू गिल्ट. एंड इसलिए जो गिल्ट है ना, इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम अमंग अस, बिकॉज जो इट की अर्जेस एंड ड्राइव्स है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड जो प्रोहिबिशन एंड कोच सुपर ईगो उस पर लगा देता है वो भी बहुत डोमिनेट करता है. सो जो ईगो है उनको इन दोनों के बीच में खेलना पड़ता है एंड टू work between them to come to a compromise and satisfy the needs. And ego अगर नहीं कर पा रहा है तब एंजाइटी, गिल्ट एंड नेगेटिव फीलिंग्स और ये सब आता है. And that is why we use defense mechanism. So superego consists of two systems: the conscience or the conscience, which is the inner voice which I just explained, and the ideal self or ego ideal. आइडियल सेल्फ होता क्या है? वो सेल्फ जो हम चाहते हैं बनना, विच वी इमेजिन कि ऐसा करियर एस्पिरेशन होना चाहिए, द पीपल शुड ट्रीट अस दिस वे, वी शुड बिहेव दिस वे एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी. एंड ये आइडियल सेल्फ जो अजम्पशंस हैं हमारे, ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं थ्रू द कंडीशनल लव ऑफ द सोसाइटी, आर पेरेंट्स, आर कलीग्स, टीचर्स, सराउंडिंग्स बेसिकली, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड. सो जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, वी गेट द रिवॉर्ड्स और वी गेट द प्रेजेस, राइट? तो वो ही जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो चाइल्ड इंटरनलाइज कर लेता है एज अ रियल और इमेजिन जजमेंटल स्टेटमेंट्स. एंड फिर उसके अकॉर्डिंग वो आइडियल सेल्फ बनता है. एंड हम चाहते हैं कि जो हमारा रियल सेल्फ है, जो हम अभी हैं, वो थोड़ा आइडियल सेल्फ की तरफ जाए एंड हम वैसे बने. अब सुपर ईगो क्या करेगा? अगर हमने कुछ भी बिहेव किया विच इज़ ऑपोजिट टू द आइडियल सेल्फ, तो सुपर ईगो हमें गिल्ट देगा एंड हमें पनिश करेगा. एंड अगर हम प्रॉपरली बिहेव करते हैं अकॉर्डिंग टू द आइडियल सेल्फ एंड वी गेट अ स्टेप क्लोजर टू द सेल्फ वी वांट टू बी, तब जो है वो सुपर ईगो हमें रिवॉर्ड करेगा एंड मेक अस फील प्राउड. एंड दैट्स ऑल फॉर पार्ट 2 गाइस. वी हैव कवर्ड द इट, ईगो एंड द सुपर ईगो, द 3 parts of personality according to Sigmund Freud. But what happens when the ego can't control the id impulses? How do we cope with the conflict between our desires and our morals? In the next video, we will learn about the defense mechanisms, the way we unconsciously protect ourselves from anxiety and guilt. I hope you enjoyed this video and gained some insight into our personality. If you want the notes and this slide, then you can join my Telegram channel. I will be posting the link in the description below. See you next time.